तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज डेट है 12/4। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, पोटेंशियल and capacitance. So you will be already familiar with the potential energy. जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, स्प्रिंग फोर्स में पढ़ा है। उसमें क्या था कि सपोज दैट एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ग्राउंड पे है पॉइंट A पे। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया EFXT, ठीक, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और पॉइंट बी पे इसको पहुंचा दिया, ठीक। नाउ दिस एक्सटर्नल फोर्स डज द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। दैट वर्क डन is stored as a potential energy in this body at point B. That work done, W, say, is F, external force, dot product between displacement and this. Now, similarly, if we have a spring here to which is attached a mass, we apply an external force to it and it gets stretched, let us say, through a displacement x by external force. ठीक है? So work done here again is same. Now, when we release either this mass in case of a spring or here in the gravitational field, when we release, the potential energy decreases, but kinetic energy increases. Any potential energy of this body or this mass decreases, but kinetic energy increases. If we add these two, potential energy plus kinetic energy, at any point during this इनकी motion जब नीचे आ रही है, it is always constant. So we say that the gravitational force Fg or the spring force Fr is conserved force or conservative force. Okay. Now, if we compare the force between two stationary charges, Coulomb's force between two stationary charges, and the gravitational force between two masses, that is Fg is equal to G m1 m2 by r square, and F electrical is equal to K q1 q2 by r square. Here we see that only what is the difference? The gravitational constant is changed to the Coulomb's constant K. Mass m1 is changed to replaced by q1, and mass m2 is replaced by q2. And there is an inverse square relation dependence on distance of both gravitational force as well as Coulomb's force. So this electrical force is also a conservative force. Let us now examine, let us prove this, how this is a electrical force is a conservative force, and define the potential energy difference between the 2 points in an electric field and the potential energy of a charge in an electric field. So let us move to next. Now, what is our next? Potential electrostatic, potential energy and energy difference and potential energy of a charge. For that, let us suppose that we have, these are coordinate axes, x-axis, y-axis,
and z-axis. This is the origin. Let us suppose that origin we have a charge q. This is called the charge q is called as source charge. It may be a discrete charge or it may be any charge configuration. This source charge is fixed at origin by some unspecified force. यानी इसको हमने यहाँ पर बांधे रखा है चार्ज. Now, since this is a charge, this will produce an electric field around it. Okay. Now let us suppose that we have a point P in this electric field having a position vector r. ठीक है. Now let us suppose that we have a point r where we have a charge q. This charge q is called as test charge and is very small as compared to q, so that it does not disturb electric field E due to q. ठीक है. Now for definiteness, let this be positive. This is also positive charge. Now we want to bring this charge from point R to point P. ठीक है. Now what we are facing here, we are facing a repulsive force because charge Q is positive. This is also positive. We are facing the repulsive force. So we have to move. In order to move from R to P, we have to apply an external force, Fext, external force, in such a way that it completely balances the electric force, which tries to push this push this charge away from it because of the repulsion. Now we bring this charge Q in small incremental steps so that it at every point it just balances the electrical force, Fe. At every point it balances so that this charge Q is moved in incremental steps very slowly so that there is no acceleration. In other words, we move this charge with a uniform speed. So Q is moved with uniform speed without acceleration A. And A is equal to 0. Okay. So we find that electrical force, external force which we apply in moving the charge is exactly counterbalanced by the electric force Fe. ठीक है. Now let us move this charge, test charge Q, through a small distance. Displacement, give it as dr. ठीक है. Slowly without acceleration, याद रखना. ठीक है. So then what is the work done by the external force? The work done, small work done, dW by the external force will be equal to Fext dot dr. ठीक है. F dot dr. Now if total work done in bringing this test charge from point R to point P is given by integrating whole of this, so that is we write W R to P, work done in bringing this Q from R to P is equal to integral Fext dot dr, total work done from R to P. ठीक है. But we know that Fext is equal to minus Fe. So WRP is equal to integral R to P minus Fe dot dr. Now Fe dot dr, now we know that Fe
is equal to QE. Force is equal to charge into electric field E, which is produced by this charge Q. Okay. Now, if we substitute in this equation number, let us say this is equation number 2, this is equation number 1. So what we get? We get work done RP is equal to substitute. So Q, we take it Q integral R to P E dot dr. The quantity this integral E dot R to P dot dr is called line integral of electric field, and ये F E dot R to P dr is called line integral of force. ठीक है. Now this work done is stored as a potential energy in the charge. जो हमने वर्क डन किया, इस चार्ज को यहाँ अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ दिस हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता लाया और इस पॉइंट पे लाया. तो अगर इसको हम रिलीज करेंगे यहाँ, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसको एक्सीलरेट करके बाहर की तरफ को काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा चार्ज. सो इसने जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक गेन की थी वो लूज करेगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक, यही अगर हम इसको क्यू को यहीं पर रखेंगे तो जो हमने वर्क डन किया वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी चार्ज क्यू की पॉइंट पी पर. ठीक है ना. जैसे हमने यहाँ पर जब वर्क डन किया था ए से लिया था एम बी तक, तो इस मास में जो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ लिया इस पॉइंट तक, तो ये जो हमने काम किया था वर्क डन दिस, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ. तो इसी तरह से यहाँ भी चार्ज में स्टोर होता है. नाउ अब ये जो पॉइंट, ये पॉइंट आर और पॉइंट पी, दीज आर एनी टू पॉइंट्स. कोई भी पॉइंट ये आर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पी पे, तो आर पे भी पोटेंशियल एनर्जी है. इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आर पे भी है और पी पर भी है. तो एक्चुअली व्हाट वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी. जो यहाँ पर थी अब यहाँ पर ज्यादा हुई क्योंकि हमें काम यहाँ करना पड़ा. ठीक, क्योंकि वह वर्क डन वो इसमें स्टोर होगा. अगर यहाँ इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी तो इसमें यहाँ पर ज्यादा होगी. ठीक है. सो एक्चुअली व्हेन वी डू द वर्क इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग द चार्ज, दैट चार्ज actually increases the potential energy, and there is a difference between the potential energy at this point and this point. So this work done we can write as a change in potential energy, that is delta U, which is equal to क्या वो होगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या थी, फिर जब हमने इसको यहाँ पर लाया तो ज्यादा हो गई. तो फर्क कितनी आई, जो यहाँ पर थी यू आर और यहाँ पर थी यू पी, दैट इज यहाँ पर ज्यादा है यू आर, यू पी इज ग्रेटर देन यू आर. तो हमने इसको एनर्जी इंक्रीज की, तो जो एनर्जी इंक्रीज की इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल एनर्जीज एट दिस पॉइंट एंड एज वेल एज दिस पॉइंट. सो वी राइट दिस एज यू P minus UR. ठीक है. Which is again जब हम यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे, so delta U, the change in potential energy is equal to minus Q integral R to P E dot dr. और ऐसे भी लिख सकते हैं UP minus UR is equal to minus Q integral R to P E dot dr. So what is this? This is the potential difference between the 2 points in electric field. So we have a definition of the potential difference. So we define the potential difference between the 2 points as the potential difference between the 2 points
in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a charge, कितना लाया था हमने, Q, from one point to another point, इसमें लिखूंगा ब्रैकेट में without acceleration, from one point to another point against the electrical field due to some arbitrary charge configuration. ठीक है. So the potential difference between the 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a charge Q from one point to another point without acceleration, याद रखना, against the electrical field due to some arbitrary charge configuration. Now इसमें 2 points हैं. ये जो हमने equation की, इसमें 2 points हैं. 2 points to be remembered. Okay, what are those? तो जो 2 points हैं तो वो ये है. नंबर 1, डेल्टा U हमने अभी देखा इज इक्वल टू UP माइनस UR. ठीक है, विच इज इक्वल टू WRP. ठीक है. नाउ इस इक्वेशन में क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन P एंड R, नॉट द पाथ along which we have brought the charge. यानी जो हमने चार्ज यहाँ पर अभी जो हमने लाया था यहाँ से यहाँ तक, ये जो चार्ज क्यों हमने लाया था R से P तक, इसको हम यहाँ से भी ला सकते थे, इस किसी और तरीके से भी ला सकते थे. ठीक, उसके बारे में कोई यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे पता है भाई एंड पॉइंट P पे क्या एनर्जी है पोटेंशियल और पॉइंट R पे. सो इट शोज दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. ठीक है. सो द वर्क डन और change in potential energy does not depend on path along which charge Q is brought. This is the characteristics of a conservative force. So electrical force is a conservative force. ठीक है. तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, एक और प्रूफ इसमें दे सकते हैं. देखिए अभी हमने देखा UP माइनस UR इज इक्वल टू माइनस QR R to P E dot dr. ये हमने देखा. Now, let us suppose that we bring a charge from R dash to, first of all, ये हम यहाँ बना देते हैं मिसाल के तौर पर, ये पॉइंट P है. ठीक है, ये पॉइंट R आपका था जहां चार्ज था. चलो हम पहले इसको इस पाथ से लाएं, R डैश तक लाएं, फिर इसको P पर लाएं. ठीक है. तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल पहले यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो फाइनल पोजीशन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी UR डैश, यहाँ पर क्या होगी UR. तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे इसको तो क्या बनेगा
final position UR dash minus initial position UR will be equal to minus Q इंटेग्रल अब क्या होगा R से हमने लाया R डैश तक E डॉट dr। ठीक है, नाउ अब हम क्या लाएंगे इसको R डैश से P तक। तो अब क्या होगा, फाइनल पोजीशन P है और R डैश इनिशियल पोजीशन है, तो क्या होगा, सो UP माइनस UR डैश विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटेग्रल E डॉट dr। कहां से लाया हमने, R डैश से P तक। ठीक है, नाउ इफ वी एड दीज टू इक्वेशंस तो R डैश एंड R डैश विल गो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या देगा हमें, UP माइनस UR, ये और ये कैंसिल होगा, UR विल बी इक्वल टू माइनस ये Q इंटेग्रल R डैश E डॉट dr माइनस Q इंटेग्रल R डैश E डॉट dr विच इज इक्वल टू Q हम कॉमन निकालेंगे, Q बचेगा क्या, इंटेग्रल R टू R डैश E डॉट dr प्लस इंटेग्रल R डैश E डॉट dr ऐसे। तो जब देखिए ये R टू R डैश है, R डैश टू P, तो ये बीच में ये डमी है, हम इसको इंटीग्रेशन जो रूल है आपको पता हो या ना हो, तो हम इसको सीधे R टू P इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ये बीच वाला क्योंकि कॉमन यहाँ अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, हम इसको सीधे लिख सकते हैं। यहाँ माइनस हमने कॉमन निकाला, सो इट विल बी माइनस Q इंटेग्रल R टू P E डॉट dr। तो वो भी क्या होगा, UP माइनस UR। तो भले हमने इस पाथ से लाया या स्ट्रेट पाथ से लाया, तो हमें जो वर्क डन हुआ वो पाथ के वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के दरमियान है। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव force, or electrical field is also a conservative field. Next, point number 2। देखिए पॉइंट नंबर 2 से पहले आपने इसमें 11th में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट ग्राउंड क्या होती है, हम 0 लेते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0। ये कोई 0 ये हमें आर्बिट्ररी चुना है, 0 ग्राउंड 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर एक कुआं खोदा, अगर कोई यहाँ पर आदमी बैठा होगा, अगर ये पत्थर यहाँ गिरा तो उस पर चोट लगेगी, क्यों, ये नीचे गिरा, वर्क विल बी डन। तो अगर हमने बोला था यहाँ 0 है एनर्जी, तो यहाँ फिर इसको कैसे एनर्जी आई, बिकॉज हमने एक ये रेफरेंस लिया था, ये 0 है, वरना रेफरेंस पर हम कहीं भी रेफरेंस ले सकते हैं, ये यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं कहीं पर भी। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है 0 लेवल का, वो एज पर चॉइस होता है, जो फ्रीडम हो, जिसे हमें आसानी हो। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर ग्राउंड पे इस पे क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ अल्फा या बीटा कुछ ना कुछ होगी इस पे एनर्जी, क्यों, तभी तो ये मारता है इसको। ठीक है ना, सो ये जो 0 हम रेफरेंस एनर्जी लेते हैं ये आर्बिट्री होती है, हम किसी भी पॉइंट पे जो आप कन्वीनियंट हो। ठीक है ना, सो वी कैन सिमिलरली वी कैन ऑलवेज add an arbitrary constant alpha to potential electrostatic potential energy at every point। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे हमने 0 बोला तो मैं अल्फा ऐड कर सकता हूं, इसके मुकाबले में इसको यहां पर है। ठीक, तो अगर हमने ये रेफरेंस लाइन 0 मानी, ठीक है, एवरी पॉइंट since this will not change the potential energy difference
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैंने पहले 0 माना था, यहां पर इस पॉइंट पे माना था 10, अब अगर मैंने यहां पर मसलन इसको ऐड किया, मसलन 0 नहीं माना, मैंने माना यहां पर 5 है, ठीक है, तो मुझे इसको भी ऐड करना, 0 नहीं माना मैंने, 5 बना, अब तो यहां पर 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 5, डिफरेंस कितनी रहेगी फिर भी 15 माइनस 5 दैट इज 10, यहां पर भी 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो दोनों केस में 10 रहेगा, तो डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी कैन राइट यूपी, उसमें अल्फा ऐड करेंगे, माइनस यू आर प्लस अल्फा इज अगेन इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, सो देयर विल बी नो चेंज। नाउ वी चूज, नाउ हमारे पास फ्रीडम है, आप पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कहां पर 0 लेंगे, वी चूज पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी टू बी 0। तो अगर चार्ज इन्फिनिटी पे यानी फील्ड के बाहर है तब उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, दैट इज अगर R टेंड टू इन्फिनिटी करता है तो जो पोटेंशियल है कहां पर R पे, तो दैट इज इक्वल टू 0 और टेंड्स टू 0। सो जब हम इस इक्वेशन में देंगे यूपी, इस इक्वेशन में माइनस यू इन्फिनिटी, दैट इज यूपी। नाउ व्हाट इज यूपी, ये सिंगल पॉइंट है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट पॉइंट, हेंस वी हैव द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ऑफ अ चार्ज। सो कैसे डिफाइन करेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge Q, यूनिट चार्ज यहां पर नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस में आता है, यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट in an electric field, इसको विदाउट acceleration, in an electric field of an arbitrary charge configuration, ठीक है। यहां पर हम लाते हैं, आप चार्ज जो क्यू है तो ये हम कहां से लाते हैं, क्यू को लाते हैं हम इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।